ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਜਗ ਝੂਠ ਪਸਾਰੋ ਵਾ। ਸਾਚਾ ਕਰ ਸਚੜੇ ਸੇਵਿਆ, ਸੱਚ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰੋ ਵਾ। ਕੂੜ ਲੱਭ ਜਾ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਠਾਓ। ਅੰਦਰ ਆਓ ਨਾ ਬੈਸੋ ਕਹੀਏ, ਜਿਉ ਸੁਣਨੇ ਕਰ ਕਾਓ। ਵਿਆਖਿਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਖਲਾਰਾ। ਜੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਆਓ ਜੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਵੋ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। गुरु जी की कृपा है कि उनकी आज्ञा से हम सब ये बहुमूल्य घड़ियों को जी पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उनके चरणों में बैठ पाते हैं, साथ संगत का साथ पाते हैं। उनकी मर्जी के बिना उनका गुणगान करना हमारे बस की बात नहीं, सुनना भी उन्हीं का प्रसाद है। आज गुरु जी ने निकिता राज आंटी जी को चुना है कि वो हमारे साथ गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर करें। विद फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड आई रिक्वेस्ट आंटी कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ अब गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू आवर प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल द संगत वर्ल्डवाइड एंड ऑल द यूनिवर्सेस। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना इस ब्लेसिंग के लिए कि मैं गुरुजी ने आज भेजा या बुलाया है सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से जो शेयर कर रहे हैं उनका भी भला होता है और जो सुन रहे हैं उनका भी भला होता है। तो जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। इसका मतलब जो भी शेयर हो रहा है आज मेरे मुंह से, मेरा तो क्या, इट्स गुरुजी's लाइफ, गुरुजी's बॉडी, गुरुजी's सोल। तो जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और उसमें जो भी ब्लेसिंग्स है, मेडिसिन है, हीलिंग है, आंसर्स हैं, गाइडेंस हैं, वो उन संगत के लिए हैं जिनको आज गुरुजी ने भेजा है। आप यहाँ हैं इस सत्संग में, जो भी आप सुन रहे हैं वो गुरुजी की मर्जी से ही हो रहा है। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। तो मैं अपना पूरा सत्संग जैसे स्टार्ट टू फिनिश मेरे एक्सपीरियंसेस क्या थे, मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, वो तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। इसलिए आज जो भी गुरुजी शेयर करवाना चाह रहे हैं, जो मैसेजेस हैं, जो लर्निंग्स हैं, उस पे फोकस ज़्यादा आ रहा है। So one big message has been constantly शुक्राना and forgiveness and मर्जी। तो इन 3 मैसेजेस पे सारा ध्यान वहीं जा रहा है, तो यही गुरुजी की मर्जी है। I'll share with the most recent experience। मैं recently अभी सिंगापुर में थी, also by गुरुजी's grace। बड़े last minute मेरा passport was expiring soon, it was not possible to get the visa by from our parts। हमें जो हाथ पैर चलाने थे, सबमिट किया एप्लीकेशन के लिए, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, हमने हेल्प के लिए मैसेज किया, सब कुछ किया अपनी तरफ से। then we let it go and गुरुजी की मर्जी से आगे जो दरवाजे खुल गए, got the paperwork in time, और मैं जा पाई to be with my sister and her family at a tough time। तो वहाँ एक संगत है जो बहुत टाइम से कह रही थी कि अच्छा योर सिस्टर्स कमिंग, मुझे आप दोनों सिस्टर्स के साथ एक सत्संग शेयर करना है, बट आई विल शेयर इट व्हेन शी कम्स, आई शेयर इट वंस एंड फॉर ऑल विद बोथ ऑफ यू एक साथ। तो वो एज इट टर्न्ड आउट, बहुत दिनों हमने सोचा कि इस दिन मिलेंगे, कॉफी पे मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं एक फ्राइडे को निकल रही थी
वेडनेसडे तक वी ट्राई टू मीट, नहीं हो पाया। थर्सडे सुबह मैं बैठी थी गुरुजी के पास और मुझे थॉट आया गुरुजी आज थर्सडे है तो सत्संग होता है। नॉर्मली आई वुड अटेंड अ सत्संग ऑन थर्सडे इवनिंग्स which has been the case for many years. Thursday गुरु का दिन होता है तो Thursday evenings को usually I used to go to satsang in Seattle and then in New York. मैंने कहा इवनिंग तो आज नहीं हो पाएगा, इट्स द लास्ट नाइट विद फैमिली, बट आई विश आई कुड बी इन सत्संग विद यू। तो सुबह आई जस्ट प्लेड अ शब्द, जो भी शब्द मन में आ रहा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल। आप देखिए वी हैव अ स्लाइट डिजायर to be with Guruji, and Guruji makes a whole bridge for us to cross, for us to reach Guruji. एक शब्द हो गया, and as it turned out, this Sangat auntie was able to come that morning, and she was able to come to the house. She said, नहीं मैं बाहर नहीं मिलूंगी, मैं घर पे ही मिलूंगी. So of course we had chai prasad. तो एक फ्रूट प्रसाद का भोग हो गया, एंड सब कुछ जैसे सत्संग होता है वैसे ही हुआ। इट्स नॉट रिचुअलिस्टिक एंड रिजिड कि हम बैठे, हमने शब्द सुना, फिर हमने ऐसे किया। तो इट वाज फास्ट एंड प्रैक्टिकल। तो मेरा मन था शब्द सत्संग में बैठने का, तो आई सैट विद द शब्द एंड देन आंटी केम एंड whoever was there, my sister and my brother-in-law's mother, we were all able to listen to auntie's satsang and have the prasad. एंड उस सत्संग में उन्होंने बहुत सारी डीप चीजें शेयर की, इंक्लूडिंग अबाउट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एज पार्ट ऑफ Guruji's grace and blessings, and then getting great blessings also. So her faith is so strong and so anchored. वो काफी बार तभी होता है after we have experienced a lot of pain and loss. Then we know that the only thing which is real and eternal bliss is God and is Guru's light. तो वो जब हाथ पकड़ लेते हैं, there's nothing left to fear. So she said that she had asked Guruji कि Guruji surrender क्या होता है? मुझे गूगल वाला मीनिंग नहीं चाहिए कि this is the literal meaning of surrender. असली surrender क्या होता है? And Guruji ने उनको सिखाया कि गुरु surrender होता है हुक्म मानना। तो that struck me really deeply. हुक्म, that is a command, that is God's will, that is God's wish. और मानना, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो नहीं मनो, कि हम ना मांगे। बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम मांग रहे हैं, नॉट ओनली आर वी थिंकिंग विद आवर लिमिटेड ब्रेन एंड आवर लिमिटेड साइट एंड दिस लिमिटेड लाइफ टाइम कि अभी मुझे ये चाहिए। एज वी ऑल नो, when we buy a pair of new clothes, soon it becomes old and it doesn't make us happy anymore. तो ऐसे जो भी हमारे डिजायर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आते हैं। वी गेट द थिंग वी वांट, देन वी वांट द नेक्स्ट थिंग। तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत ही ब्रीफ होता है। सो मांगो नहीं मनो, मांगने से वी आर ऑल्सो टेलिंग गॉड what God should do, but that doesn't make any sense. God should tell us what to do, which is the mano part, और हमें immediately गुरुजी की बात मान लेनी चाहिए। So when she said हुकुम मानो, that struck me so deeply. I just thought about it all day and days and weeks after that. And मैं किसी और दिन जा रही थी गाड़ी में, and I was thinking about this. I was thinking हुकुम मानो, it doesn't just mean कि हम accept करें कि गुरुजी का ये decision था, but maybe we are not happy with it, so we accept it with a heavy heart, या कहते हैं चलो not happy with that, but गुरुजी की mercy. But that's not what I think it means. I thought to myself कि this means कि आप गुरुजी के हुक्म को खुशी से accept करो, that you celebrate his decision, because इतना faith है that we understand that Guruji's decision would bring us the most happiness. Life is not meant, I don't believe, because Guruji सारी blessings end करते थे with ऐश कर, जायश कर, कल्याण किता। अगर गुरु ने किसी का कल्याण किया है और कहा है कि let's focus on कल्याण, अगर गुरु ने कहा है किसी का कल्याण किया है, how could you possibly be sad? So the point of life is not to be sad, but जो sadnesses आती हैं, जो difficulties आती हैं, वो हमारा karmic balance होता है जो हमें pay off करना होता है। But if we do it मतलब with a lot of resistance, so we are not able to pay that debt off with the kind of faith and courage जो गुरुजी हमें दे रहे हैं। So if we are able to accept those parts of life and move through them with sadness, perhaps there are tears, but with grace कि जो हो रहा है for the ultimate good हो रहा है,
which is moksha, which is reconnection with our own divinity, with Guruji, with God, कि हम हमारी human life or human sufferings and even human happiness dissolve हो जाए और eternal bliss मिल जाए, which is to be just merged with the divine light. If that is truly जो असली चीज होती है, गुरुजी कहते थे मुझसे कोई असली चीज नहीं मांगता, लोग अपनी मटेरियल डिजायर्स में रह जाते हैं, यहाँ पे इतने लोग आते हैं बट असली चीज कोई नहीं मांगता. एंड दैट संगत आस्क्ड कि गुरुजी असली चीज क्या होती है? ही सेड नाम. सो गॉड्स नेम. अगर हम रब से रब को मांग ले, हमने सब कुछ मांग लिया और सब कुछ ले लिया, और वो मना भी नहीं कर सकते बिकॉज गुरुजी होल हार्टेडली जेनरसली सबको देते थे जो भी हम मांगते थे. तो rather than asking for something which is ultimately not good for us or is short term happiness, हम अगर रब से रब को मांग लें, नाम मांग लें, वो कनेक्शन मांग लें, डिवाइन कनेक्शन, that is eternal. You must have heard in another auntie संगत कि जब उनका एन वक्त आया, when she couldn't breathe and she reached out to her husband and her children and everybody कि ऑक्सीजन लाओ, डॉक्टर को बुलाओ, इनको बुलाओ, कोई नहीं हेल्प कर रहा. And when she just remembered Guruji and took out his picture and just thought of Guruji, उनको सांस आ गई. So that is असली Guruji. तो सांस कौन ले सकता है? Only God. So Guruji can do anything. Guruji can give anything. Guruji can give life. गुरुजी ने खुद एक और संगत अंकल के थ्रू बताया था कि वो पहले लाइफ देते हैं. सो अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व नहीं हो रही है, वो कर्म काटनी है. सो पेशेंस इज द अदर हाफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ फेथ. तो उसके लिए we need to have a lot of faith and a lot of patience, and that same part of it is positivity. अगर faith है और अगर patience है, then we would accept things in a true ash karo, that we are living our life as happily as possible while going through whatever we are going through. I know that what I'm saying is not easy, and if I had not seen and been through a lot of it, I wouldn't say it. लेकिन ये सब गुरुजी के हाथ में. Whatever Guruji wants to happen. When my mom got very very sick, आप सबको उनका सत्संग पता ही होगा, when she was in a near death state for nearly 3 weeks on life support. But the minute I heard the news, immediately एक Monday morning था, the minute I got the phone call from my father कि ऐसा ऐसा हो रहा है, she's admitted to the ICU, she can't breathe. I was about to start my Monday morning satsang with Guruji, and the shabad that started playing on its own without me playing it, ऐसा भी बहुत बारी होता है. गुरुजी के powers can do anything. Lights flicker होती हैं, शब्द खुद से play होता है. Recently, my sister की computer पे she'll be driving, it's connected to her phone, and whatever satsang will start playing from her phone, and it will be just the message she needs. So Guruji can do anything, and these kinds of things happen all the time. So the shabad that started playing मेरे की was शुक्र करा. गुरुजी ने मुझे पहले भी सिखाया हुआ था शुक्राना के बारे में, that you had given me a dream job that I wanted and I forgot to say thank you. Guruji came in my dream that night and said, शुक्राना भी नहीं कर सकती थी, even though I had brought flowers to satsang. But the expression of gratitude is not the same as saying thank you. Guruji directly had told me शुक्राना भी नहीं कह सकती थी, with a laugh and a joke. He was teaching me. और जब ये वक्त आया कि mom is on what seems like a last breath and Shukrana Shabad is playing, Guruji really clearly indicated to me, you have nothing to do but Shukrana, which I took it to mean as he will save her life. But obviously we had to go through the ups and downs of watching her almost die so many times in the weeks and days to come. But it was also clear कि हम एक ICU रूम के बाहर हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम उनको छू नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए. उनकी लाइफ कहने को इज अंडर द डॉक्टर्स वॉच, बट वो डॉक्टर कितना अच्छा है, वो नर्सेस कितनी अच्छी हैं, ऑल दैट मेडिकल स्टाफ, दे आर लेड बाय द डिवाइन हैंड. Millions of people in the same situation, 1 in a million may get that sick. That was Guruji's path. And 1 in a billion would survive where she went and came back. That is Guruji's path. And that is the equation of faith between a guru and his path. So it was so clear to us at that time that we can do nothing. Her life is in
God's hands and she has strong faith. True होना है, गुरुजी ने लिखना है, we accept everything. So that gives a kind of peace when we stop struggling and resisting and trying to control things or हाथ पैर मारना, as my mom would say, हमारे हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा. We only have to do the bare minimum of what Guruji has asked us to do, or the maximum, our best effort of what Guruji has shown us to do. So हमें हर सिचुएशन में हर चीज के लिए शुक्राना करना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर दैट सिचुएशन, बिकॉज एक शब्द में आपने सुना होगा कि गुरु हमें, भगवान हमें 1000 चीजें देते हैं, हम उन सब का शुक्राना करते रहते तो we would spend our lives and all the oceans and inks and all would be dried up, but we don't do that. We focus on the one thing which we don't have or that we want. अगर हमारा माइंड उस एक चीज पे फिक्सेटेड है जो हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए, that is in the Shabad it says भिखारी जैसा mindset, complete lack, कि only able to see what you don't have. That is a big scarcity perspective rather than seeing the million things you do have. If we are to thank ourselves, for our Guruji, for what we have for ourselves, clean air to breathe, safe shelter every night, someone who cares about us, or many, many people who care about us. And now pandemic has been so difficult. I know that so many people have lost their lives and are grieving, and may God bring them, closer to God. But at the same time, jo satsang sirf in person ho rahe the, there are now millions and billions of people who can connect to Guruji and to satsang, despite, maybe they did not have the physical ability or the health or the resources to make it to a physical satsang. तो महासंगत कनेक्ट हो गई है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं, हमने ग्लोबली इतने सत्संग सुने हैं, ये सब नहीं पॉसिबल था विदाउट सीइंग द ब्लेसिंग इन द क्राइसिस. हर क्राइसिस में कोई ना कोई लेसन होता है, फिर भी कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है. You have to find that blessing, and we can only find it by starting by saying Shukrana Guruji for everything you have given us, and then scanning what is it that I have today that I have received that I did not have yesterday or 5 years ago. If we are always looking forward towards what will happen, that either creates fear, or towards what we don't have, which creates desire and lack. But if we look at the past and we look at the present, we can look at everything we do have. And we can also look at all the problems which are gone away and all the problems we could have had which we do not have. So every day that you're breathing an easy breath, especially in a time of climate change, shortage of clean water, forest fires, so many, obviously I don't need to say the corona illness which has taken and affected millions of lives and breathing, and there's so much sickness and struggle around us. For every little thing, the shukranas are countless. And then if your parents, your siblings, your children, your loved ones are safe and healthy, if you have a job, if you have work you care about, if you have an income which sustains you and you're capable and contributing to the world, Maha Shukrana, there are endless Shukranas. And even if you are sick and there are people who can care for you, there is a medical system, there are medicines now. Even for COVID now, the vaccination exists and the antiviral medications exist. Every day we are getting something which did not exist a year ago. So there is constant Shukrana. It depends on your perspective and how you train your mind. Do we train it towards Shukrana or do we train it towards lack and loss and scarcity? So with Guruji, we have to have complete faith and surrender, which means hukum manna, which means to celebrate, as I was saying, Guruji's decisions. And then I was reflecting on that message and thinking this thought, कि हुक्म मानना means not to accept a decision, but to celebrate it with joy and happiness कि हाँ, गुरुजी ने मेरे लिए ये किया तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा. Immediately, as I had that thought that it's a celebrate, not an acceptance only, a car passed by which had 4 sevens in the license plate. And ऐसा बहुत बारी होता है, दिन में up to 3-4 बारी कोई license plate जाएगी which will have a 7-7, or somewhere I will see the symbol of an Om or a heart or a butterfly or something. There are 1 million, God is everywhere and in everything. जब वो
nazar ban jati hai. Guruji shows presence through lots and lots of ways and in all the ways. So at that time, but when it's like 3 sevens, it's a special extra 4 7. So I really felt that Guruji was affirming, yes, Okomanna means to celebrate Guru's decisions. And then the other thing that is, connected to that is the piece around forgiveness. And to be honest, even I'm still working on this because in a practical life, I understand sometimes it's hard to forgive people who we perceive have hurt us. Lekin all the people who have come into our life are simply wearing a human chola. They are souls with whom we have passed contracts. We have done something to them. We have either loved them or hurt them or both, and they have done the same for us. So the same souls are recycling through many human lives and bodies to continue learning how to love and be in peace. Guruji's 3 messages, he did not preach Satsang is an open space, welcome to every human. Every human being is equal and divine and worthy of respect. So Guruji said, go out of your way to help people. And if you cannot help, walk away, don't hurt people. Go out of your way to help people. That's a really important message. It's not just if you're able to, but go out of your way. And that is for everybody. Guruji didn't say people of a certain religion or a certain faith or people who have done good. No. Only God can judge. We are not to judge. So go out of your way to help people. All religions are equal. God is one. That is his core message. So do not have any kind of thing, this person is this person is of that, we are not the same. ऐसा कुछ भी नहीं है. As we know, absolutely everyone is welcome in Guruji's darbar, and Guruji wants us to treat everyone with love and respect. Because Guruji's core rule was कि निंदा चुगली बहुत सख्त मना है. Guruji didn't say chori thaggi mana hai with the same emphasis. I never actually heard him say that. Ninda chugli mana. Because when we say something bad about somebody, we are abusing the divine. Because everyone is a soul, which means you are a part of the divine flame. So, kisi ki bhi burai karna, we might think it is justified, but it is not. We are ultimately, giving them our good karma, taking on their bad karma, and being in bad form with Guruji. It's not what Guruji is trying to teach us. I realize this is also a very aspirational thing to say कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए. There are things which happen which are negative and they do hurt us. And I'm not saying we shouldn't talk about those. तो इसका आंसर एक शब्द में मैंने सुना था कि if you're purely talking about what someone has done, these are the facts. We are not saying the quality or the characteristic of the person, that person is XYZ bad name. We are saying इन्होंने ऐसा किया, ऐसा मुझे बुरा लगा. That is stating a fact, and that is you talking about your own feeling. And अगर वो चीज सच है, तो वो निंदा चुगली नहीं है. It is something else to name what has happened for the sake of your own healing, for the sake of releasing your pain. If that is the intention, आप अपना दिल हल्का कर रहे हैं because you're hurt by something and something truly has happened, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. Because it's true, it's not ninda, and because you're not cursing out the other person, you're talking factually about what in fact did happen. It's a truth. So on the flip side, that shows us that अगर हम नहीं चाहते हमारी निंदा चुगली हो, हमें intentionally या intention से कभी भी गलत काम करना ही नहीं चाहिए. So if someone says something about us and it is true and we did that, that is harmful. But Guruji said, go out of your way to help people, and if you cannot help, walk away. At least don't hurt people. So at the very least, we should try to the best of our intentions and knowledge and abilities not to hurt people. But always, intentionally or unintentionally, वो हो ही जाता है. We are human, we are imperfect, and that brings us to that point around forgiveness. In fact, if we knew कि हमने कौन सी चीजें की हैं which have caused pain or hurt, we have a lot of माफी to ask, but we don't even know किससे माफी मांगनी है because आधे टाइम तो हमको पता नहीं होता कि किसको हमारी कौन सी बात से दुख हुआ. Sometimes it's so slight we don't realize, or we did it with a good intention for whatever reason. जैसे if someone enters, a room
And I said, please आप बाहर चले जाइए, because maybe I know someone is sick inside the room and I'm trying to protect them from getting the germs. But maybe they felt bad, or they felt insulted, or they felt rejected. So आप देखिए, with a good intention also, something hurtful can happen. So if, and sometimes, as we know, when we are carrying anger and pain, our tone will carry that anger and pain, and that does cause anger and hurt to others. So of course we have to try to clean our soul all the time, and not do those things, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, of which anger, greed, all of those things are in there. But there will inevitably be things that we do that hurt other people. इसलिए हमें रोज माफी मांगनी चाहिए from everyone. Guruji, sorry for everyone I hurt, that I don't even know about, unintentionally or intentionally, in this lifetime or past lifetimes, we don't know. बहुत शब्द में है कि somebody looked back to 100 lifetimes and he said, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ इस lifetime में? And God said, look at your 101st lifetime. वहाँ पे you will find the answer of the pain you caused, which is responsible for the pain you are experiencing now. Because we only learn our lessons by going through the same thing that we have caused other people. So that can give that kind of surrender कि अगर इस पेन का कोई रीजन है, अगर मेरे कर्म कट रहे हैं, I in some lifetime, let's say I did this to somebody and I'm feeling a pain now, it can give us strength and grace to go through it and say, ठीक है, let me go through it, and it creates softening, compassion, empathy in us. कि if I'm feeling like this, may I not cause this pain to others, and sorry Guruji for all the pain I may have caused. It creates a kind of humility that we are not perfect. हमारा ईगो जो भी है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, कभी जाता तो है नहीं एज ह्यूमंस, बट वी गेट अ सेंस कि हमारी से गलतियां हो रही हैं और होती रहेंगी despite our best efforts, but best efforts should continue. इसलिए forgiveness is a very important part of the occasion, of the equation, कि हम भी माफी मांगते रहें, both to Guruji and practically. If we know we have hurt someone, it is never too late to apologize. Sometimes we cannot access them practically, so we can apologize in our hearts, in our prayers, in our minds, on a soul to soul level. And if we can, and it takes a lot of courage and humility, but if we can apologize to people in person, it is never too late to do that. It is always meaningful. So the other thing that I wanted to share, so it was surrender, shukrana, forgiveness. And then finally, I wanted to share, when I was a few months ago with my parents, तो सत्संग चल रहा था, and because of COVID, उस वक्त सत्संग में कोई नहीं था, my family थी, and I was feeling very restless. So while listening to the shabads, I was just walking back and forth, and it was helping me to listen and concentrate more. So I was listening, and बीच में से दो लाइनें मेरे मन में आई, and Sangat ji, I can 100% tell you, it was not me. It is not my mind. It is only this machine of a body that is carrying this soul. And because of the transmission channel of Satsang, Guruji inserted 4 lines in my head. And when that Satsang was over, I had to go and quickly write it down. And Guruji made a poem happen. He wrote a poem. I'm simply the medium through which it was communicated. And I would have received the message or just the guidance to share this with all of you today. So, Jai Guruji, this is Guruji's poem written on Jan 3rd of this year. It is called Khazana. And I'll tell you myself, मेरी तो इतनी हिंदी भी अच्छी नहीं है. Whatever happened is 100% Guruji. Okay. खजाना. जिस पर गुरु का साया पड़ा, वो मोह माया से मुक्त हुआ. जिस पर गुरु का साया पड़ा, वो मोह माया से मुक्त हुआ. उसने सबसे प्यार किया और हमेशा शुक्राना दिया. फिर सबको माफ किया, हर किसी को आसरा दिया. खुले दिल से वो जिया, खुले हाथ से सब कुछ दिया. इस दुनिया से हसमुख गया, भव सागर को पार किया.
जिसको गुरु ने शरण में लिया उसने असली खजाना पाया, जिसने गुरु को प्यार किया उसे वहीं पर मोक्ष मिला। जय गुरु जी। तो बहुत बहुत प्यार गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना और बहुत बहुत माफी for all the mistakes I have made today and forever, and all the ones I will make, and the shukrana for everything today and in the past and in the future is just endless. And finally, प्यार। गुरुजी हमेशा कहते थे कि एक आंटी उनको रोज उनके स्वरूप को बादाम खिलाती थी जब गुरुजी छोटे में थे। एक दिन वो जब गुरुजी के पास फिजिकली गई, गुरुजी ने कहा अरे रोज बादाम खिलाती है, गुरु को बादाम नहीं खिलाते। एंड शी सेड तो मैं आपको क्या ऑफर कर सकती हूँ। सेड गुरुजी, गुरु को सिर्फ प्यार और शायद कभी एक फूल। सो इट इज जस्ट प्योर लव। There is nothing, we don't have to fear God. We have to only love God because we cannot begin to imagine Guruji's love. We have never, we cannot know unconditional love as humans except from, if we are lucky enough to have a Guru and this Satguru in our lives, we may experience a taste of unconditional love. And as humans, maybe we can only try our best to give unconditional love. Koi kuch bhi kare, if we love them and we are with them. So eternally just offer your love to Guruji and just be focused on your love for Guruji and feel Guruji's love for you. That's all there is to it. Everything else is peaceful when there is love and gratitude and maafi, apology. And the same way that we are asking, it's another thing we are asking for a maafi. मांगना भी एक चीज होती है, मगर फिर माफी देना भी एक चीज होती है. How can we mango maafi and want forgiveness for ourselves and not give it as freely as we want it? If we want to be forgiven, if we can feel the guilt of doing something wrong and we want to be forgiven from that guilt, then we also have to give maafi as freely as we are asking for it. So, Jai Guruji, bahut bahut shukrana for attending this satsang, for giving this opportunity, for connecting to Sangat worldwide. Thank you, Jai Guruji. बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज का, बेअंत शुक्राना। एंड गुरुजी's blessings are immense. He hand holds us. वो हमारा हाथ पकड़ के हमें कितना ही कुछ सिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आज आपका बर्थडे है या आपके परिवार में किसी का भी बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो हम सब संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी ने आज पिछले साल की गलती को कंप्लीट करने का मौका दिया। नीलिमा भाटिया आंटी जी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गुरुजी ने याद करवाया समय पे